ये मैं हूँ गोवा से वापस जाते हुए. I have been to Goa 3 times now in my entire life. First one was with my family. Second one was with people from Delhi, my friends. Third one also gang from Delhi, again my friends. This is me returning thinking कि by fourth time तो I am gonna explore South Goa क्योंकि I just don't get it. Why people go to North Goa thinking कि बहुत अच्छे pubs होंगे, clubs होंगे, दारू पिएंगे. But really, is that what Goa is all about? Anyway, I am back to Delhi. This is me inhaling fresh air of Delhi. Wow, मजा आ गया. I am going to go with my family for a vacation. And this is what I have decided to pick up from the airport. And probably my last drink for this vacation क्योंकि इसके बाद पापा मम्मी होंगे. और if you are one of those who can drink openly with their parents, good for you. और फाइनली वी आर हियर इन दुबई. देखो पर्सनली मेरा ऐसा सच कोई मन नहीं था कि दुबई जाएंगे पेरेंट्स के साथ घूमने, क्योंकि मेरा मन था कि यूके लेके चलूँगा, जॉयल भी वहाँ होगा तो मेरा खर्चा थोड़ा बट जाएगा. बट एनीवे वी आर मल्लूज और हमारा और मिडल ईस्ट का रिश्ता थोड़ा पुराना है. So parents were interested in Dubai, so well anyway we are here. Day 1 is Ferrari World. हमारे पेरेंट्स को इसमें इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि फरारी वर्ल्ड में जाओगे तो कमर थोड़ा इधर उधर हो सकता है. टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ देयर एज एंड देयर स्पाइन, पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू स्किप फरारी वर्ल्ड एंड इंस्टेड go sightseeing here and there. So it was only me and Abel for the Ferrari experience. And just like that, we are here in the Ferrari world. It was quite an overwhelming feeling क्योंकि अभी तक बचपन में सिर्फ advertisements में देखा है and I would have never thought that I would be here. But I'll try my level best to tell you honestly कि if this place is worth it or not, and if so, how much dirhams would it cost you to make it not worth it? क्योंकि Dubai is a bloody expensive place, and this place is no exception. Feel like a little kid. How old am I? I don't know. पर मुझे क्या पता था ये सब तो कुछ भी नहीं है. सेकेंड डे वी आर गोइंग टू दुबई मॉल और मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाके मुझे पता चलेगा कि AUKAAT का असली मतलब होता क्या है. ओ माई गॉड. The first thing that we see as we enter is this amazing man doing some sort of tricks with ball. Well, that is the last thing that I want to see, but anyway, good job, but I think I was expecting a lot more out of Ferrari World. So as of now, looking at this man as the first thing that I am looking at, I am not taken back as of now with Ferrari World. Let's see आगे क्या हो रहा है. उसके बाद हम देखते हैं एक कैफ़े जैसा एरिया है. इट इज़ अ सेटअप, आई थिंक इट्स सेंटा क्लॉज लैंड. यहाँ पे बच्चे बैठे हैं और कार्टून्स में अपना क्रेयॉन यूज़ करके कलरिंग कर रहे हैं. हो गया ये सब अंडरवेलमिंग थिंग्स सोच के हम घुस गए अपने पहले राइड में. दिस इज़ आवर फर्स्ट राइड एंड आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ इट क्योंकि लाइन तो बहुत लंबी है. दिस इज़ लाइक सम सॉर्ट ऑफ ग्लिम्स इनटू द फर्स्ट राइड क्योंकि असली राइड में phones are not allowed क्योंकि apparently it's going to be so thrilling, but I'll tell you on the other side how it was. पहला ride not worth it guys, not worth it. क्या नंबर था हमारा? नंबर 8 में गया था ना. क्या नाम था उसका? ड्राइविंग एक्सपीरियंस. हाँ, Viaggio Italia. Viaggio in Italia. वो बंदा in Italy. Viaggio in Italia, number 8. Not worth it. It was. So the first ride that we took was so disappointing. We have now decided कि सीधा roller coaster चलो, which is what all the hype is about. That will be the zenith, I believe. कि भाई it's worth coming and worth spending the money. If even that is not worth it, I'll die broke. This is all
all the uniform of Ferrari, I think. Yeah. To be very honest, I didn't know that this was world's fastest roller coaster. No, honestly, I didn't know. But I was looking forward for this roller coaster regardless. क्योंकि इससे पहले जो भी राइड्स किए बस एक ही किया, लेकिन उससे पहले जो भी कुछ देखा was not really worth the hype and not really worth the money that you have to spend for these tickets. Like, really, honestly. So before we could queue up for the roller coaster ride, if you go this way, you will see the entire roller coaster path. तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, majorly those people who were not willing for the ride, were standing here and looking at the roller coaster and people having fun in it. I felt bad for them, but मेरा टाइम भी आएगा शायद. Well, anyway. And finally, here we are making our way for the fastest roller coaster in the world. Now, there are two ways to get into it. One is to stand in line like everybody else is from a general pass admission line. The other one is a quick pass entrance. Okay, अब ये जो लाइन आप देख रहे हो, लोग हमें जो घूर के देख रहे हैं कि हम दूसरी लाइन से कैसे जा रहे हैं. आपने नहीं देखा कि कैसे घूर रहे थे? I'll show you once again. Let me rewind. Well, तो anyway, जले पे नमक छिड़कते हुए we went ahead, ignoring all the stairs. हमने देखा कोई लाइन ही नहीं है क्विक पास वाले में. So quick pass is another additional band that you tie on your wrist, just like this. It will cost you another 250 dirhams. So on top of your 340 dirhams of entry ticket price, you pay another 250 dirhams to skip the queue. अब हम सिर्फ 2 लोग थे तो we paid 500 dirhams to get it. But imagine if you are coming with a family and you are 4 or 5 of you guys, you're not gonna shell out another 5 into 250 dirhams on top of your regular fare ticket as well. That is bonkers. But imagine the line that we are skipping. So we thought it was quite a nice investment. कोई line ही नहीं है. We would go to every ride that we want to and skip the line every time. It was a good feeling. Mostly because we would get the stairs. Changed my mind. Changed your mind. Crazy. Oh my god. It's fast. It's fast. बाल उठ गए. My god. सही है. लेकिन क्या मतलब था? I'll change my mind. Yes, probably the fastest roller coaster. Probably. It's too fast. ये बड़ा बैड है. That is true. Good. It was a good spike. एक बहुत बेकार एक्सपीरियंस है, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. उल्टे नहीं किया. हाँ, उल्टे नहीं. मुझे पीछे से लगा कि कोई ना कोई तो करेगा. कोई तो करेगा. मुझे तो हमने कर लिया है ये the first one and number 8 हम कर चुके हैं. बाकी we took a read of everything. Apart from the Formula Rosa, everything else is like very toned down. It's for kids, for family, for everyone. So the next big thing, or supposedly the next heart-raising thing is number 16, which is Turbo Track. जॉ में थोड़ा सा ना बहुत दूर से स्टार्टिंग में पकड़ा था, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया था. सीखना चाहिए. हाँ, फिर सीख रहे थे. सीखना चाहिए गाइस. जॉ पकड़ के मत रखना, बहुत दर्द होगा जॉ में. वो है ना, ये कौन सा है? वर्टिकल जंप. ये ऐसा था क्या? तो ये तो बोला था. ओह क्रेजी. पूरा. ओ भाई घाट पड़ेगी. डर लग रहा है. मुझे लगा कि ये होगा जो नॉर्मल अम्यूजमेंट पार्क में होता है. ग्रेविटी वाला चीज होता है. हाँ, तो हम नंबर 16 में जा रहे हैं ना. वो 16 है, वो है. 16 वो है. क्रेजी. वहाँ तक जाएंगे और ऐसे आएंगे. ठीक है, वही हो जाएगा. आगे वापस आ गए. वापस आ गए. टर्बो ट्रैक. टर्बो. तो अगर आई कैन सेव यू सम स्टेप्स इफ यू कम फॉर karting academy, it will cost you 60 AED. गुड़गांव में कर लो यार, नहीं करना यहाँ पे. चलो. तो इस राइड में घुसने से पहले यू हैव टू डू अ हाइट चेक. एंड जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कितना लंबा हूँ. But anyway, this was the first time in my life that I was ever let go without having to do a bloody height check.
Okay, just got done with turbo track. Fast, very fast. There's one thing about Ferrari world. It's too fast, guys. Too fast. Can't compete. I mean, sorry. And for obvious reasons, ride में phone allowed नहीं होता है. So I recorded this from far so that I can show you guys what turbo track looked like. After two back-to-back amazing rides, something more exciting we're about to do. अभी दिखाता हूँ और मस्त. And it's even more heart thrilling. Is that what? I don't know. तो अब जो राइड में जा रहे हैं वहाँ पे you get to drive it yourself and I'll show you what we're gonna drive. Family. Salute me, familia. मेरा इतना बेकार इमिटेशन विन डीजल का देखते हुए एबल ने कहा मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं. अब वाह क्या हगा है. There was 2 sets of remote controlled toys. इस साइड पे there was speed cars and on the other side there were speed boats. हम पहले स्पीड बोट की तरफ आए थे तब उन्होंने बोला कि ये रिपेयर हो रहा है तो हमें कार की तरफ लाइन में खड़ा होना पड़ा. जब कार खेलना शुरू किया तो वो रिपेयर हो रहा है और यहाँ पे हम लाइन में खड़े हैं. और फाइनली जब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए थे यहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके पीछे 2 बड़े बच्चे खड़े हैं काफ़ी देर से लाइक 2 idiots वेटिंग फॉर देयर टर्न्स टू हैव अ गो एट रिमोट कंट्रोल स्पीड बोट्स इन फरारी वर्ल्ड. उन्होंने अपने बच्चों से बोला साइड हो जाओ इन बेवकूफ़ों को खेलने दो थोड़ी देर. और जब फाइनली हमारा हाथ लगा द बोट दैट आई गॉट हैड नो बैटरी. After this remote control spectacle that we did enter another ride which was Speed of Magic. Now there was nothing related to speed here, but I would say there was some magic. Good 3D, 4D or 5D, whatever it was. And to be honest, this was the last or I would say second last ride that we did. इसके बाद we did not do any rides क्योंकि oh my god it was not even worth getting into. Even though we had the quick pass कोई line नहीं थी but even then we didn't bother. It was too childish. So if you have kids please feel free to come and spend on your kids because kids are a big investment anyway. So think twice before having 1 or 2 or triple. I don't know. तो इसके बाद we entered this fantastic museum of F1 racing cars. Had a good look at all the history. Not that I care because I'm too poor to follow F1 racing. And the only ride that we did after this gave us the same level of excitement that we got in roller coaster. Because we decided to do the roller coaster once again. Here we are, back again. Back again to ride the world's fastest roller coasters. One time, not enough. And as usual and rightly so, this roller coaster had a long line. Second time. 2 बार कर लिया तो भी थोड़ी भी worth it. Take a photo. Alien लग रहे हैं. That's another 120 dirhams guys. Fucking expensive place. Oh my god. और इसी के साथ पूरे साल का बैंक बैलेंस उड़ाते हुए हम वापस जा रहे हैं. We're exiting Ferrari world. We have called our parents कि please come back and take us. हमने खाना भी नहीं खाया क्योंकि पैसे नहीं है. Take us back.